Okay, Kirti Singh, do you have any proof? Do you have any evidence that there has been threats and intimidation? Do you all have records of calls? No, because a lot of this at the moment is one allegation being made by the wrestlers, but many of them are unproven. When you say that the girls are being threatened, where is the evidence? There is evidence. The calls will be there. There is evidence. Should the police even try to gather it? I mean, the police hasn't done so. It hasn't even taken a 164 statement from Brij Bhushan. It is letting Brij Bhushan roam the country, organizing yatras and organizing demonstrations in his favor. I mean, there is a limit, because all these girls have spoken in front of the committee. They have given detailed evidence of places where they have been, subjected to sexual harassment, in hotels, in other places, wherever in the office of Brij Bhushan. They've given the name of people who have facilitated this harassment. It's not as if they haven't given details. And it's not, and the young girl who was not even, who was a minor, she certainly has also said and given details. So it's not that, and the threats are being given to them. And what's more, why I say the police are partisan is because actually the police, on a day when it was raining heavily and these wrestlers who had been out in the open tried to get in some makeshift beds, the police stopped them and there was a ruckus. Even the Delhi State Commission chairperson was picked up by the police and shoved into the car as if she was a very lawless person and was doing something atrociously wrong. So it's not as if, the Delhi police has not been... Let me for a moment once again stop you. You made that point again. You're claiming, ma'am, just a minute. You're claiming that the police has acted in a partisan manner. You're claiming that there is evidence of calls which have been, which these girls have received, that the Delhi police should go through the call records of Brij Bhushan. But I just want for a moment to turn to Amitabh Sinha. Amitabh Sinha जी, आप वकील भी हैं, आप बीजेपी से साथ भी पहले जुड़े हुए हैं. मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं. क्या आप मानते हैं कि एक तरफ है बाहुबली नेता, दूसरी तरफ है ये ओलंपिक एथलीट्स जिन्होंने देश को गौरव लाया है? क्या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है इस बाहुबली नेता को? ऐसा लगता है कि एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही सरकार एक बाहुबली नेता जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है. कोई भी मंत्री भी नहीं आता इन रेसलर्स को मिलने के लिए. जब कोई अवार्ड होता है, कोई ये रेसलर मेडल लाते हैं तो सब उनके पीछे जाते हैं. आज कोई उनके साथ नहीं है. क्यों? क्या वजह है? क्या सरकार क्यों ब्रिज भूषण शरण सिंह को प्रोटेक्ट कर रही है? राजदीप जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. एक तो सबसे पहले मेरे जो बारे में आपने दोहरा परिचय दिया उसकी आवश्यकता नहीं थी. यहाँ मैं एक कानून के विद्यार्थी के नाते, एक लीगल प्रोफेशनल के नाते मैं यहाँ आया हूँ, और यही आपके गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने भी मुझे कहा था. पार्टी का परिचय वैसे भी देना अभी इरेलेवेंट है, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज्यादा, चूंकि यहाँ पर महिलाएं, लड़कियां इन्वॉल्व हैं, और खास करके वैसे पर्सनैलिटीज हैं जिनका कि अपना एक इमेज है देश में और विदेशों में भी. दे हैव वन मेडल्स फॉर द कंट्री. लेकिन एक चीज ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है. एक बात तो ये डॉक्ट्रिन तो मानना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है. कानून यानी कि जब जुडिशियरी के पास ये गए, इसमें एक बहुत चेन ऑफ इवेंट्स है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं है. जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को ऑब्वियसली बहुत ही कायदे से, बहुत ही सिस्टम से उसको एनालाइज करने की कोशिश की, और उसके बाद जब उसने कोई एक अपना फाइनल क्लोजर दे दिया इस वर्डिक्ट पे, और उसके बाद मुझे अफसोस ये बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तब उसके बाद इस पूरे प्रकरण में जो मैसेज दिया गया, जो तुरंत स्टेटमेंट आया कि वी विल कंटिन्यू विद द प्रोटेस्ट. आप एक और सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, इसका मतलब है शुरुआत में आपको कोर्ट पे, जुडिशरी पे भरोसा था, लेकिन जब कोर्ट ने जो भी अपना वर्डिक्ट दिया, जो भी दिया, मैं उस पर भी अभी जाने का विषय नहीं, तो उसके बाद आपने तुरंत घोषणा की कि हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे. तो ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ या डेमोक्रेसी नहीं है, तो मोबोक्रेसी है. मोबोक्रेसी यानी कि भीड़ तंत्र. अब आप ये बताइए कि जंतर मंतर से कानूनी फैसले होंगे क्या? आपको ये जानना चाहिए कि जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो इन्वेस्टिगेशन है
उसमें कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात जो है वो मेरे सामने स्पष्ट है, सॉरी आपकी बात मेरे सामने स्पष्ट है कि उसमें जो मैम है जिन्होंने लड़कियां और नाबालिग और ऐसी बहुत ही इमोशनल पॉइंट्स रेज किए हैं। देखिए कानून में इमोशन की अपनी जगह जो है वो बहुत सीमित होती है, उसमें तथ्य होते हैं। और मैं ये बोलूं कि यदि इन्होंने बहुत मेडल ला के और उसके बाद नाम किया तो भी वो एक मिनट राजदीप, वो कानून से ऊपर नहीं है, वो जो रूल ऑफ लॉ है वही चलेगा। यदि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपना काम कर रही हैं, इन्होंने जो अपने स्टेटमेंट दिए बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इवेलुएट किया, उसके बाद उसने ये लिफाफों को पढ़ने के बाद में, उनके चार्जेस को पढ़ने के बाद में उन्होंने केस बंद किया। अब यदि मान लिया FIR अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें आप किसी को गिरफ्तारी के लिए और उसमें खापों का इन्वॉल्वमेंट, देखिए ये खाप इन्वॉल्वमेंट, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नेता गए, इन्होंने उनके केस को और खराब किया है। मैं आपको इतना बता दूं, मैं एज ए लॉयर में जानता हूं प्रेशर टैक्टिक्स से जुडिशरी नहीं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन, अच्छा नहीं सर, अमिताभ जी आपने एक बड़ी बात कही है कि खाप पंचायत को वहां लाकर, पॉलिटिशियन को लाकर ये पॉलिटिसाइज हो गया है। वेरी क्विकली कीर्ति सिंह, बिफोर आई गो टू नॉरिस प्रीतम ऑन द स्पोर्टिंग एंगल, डू यू अग्री that bringing in Khap Panchayat, saying we will only listen to what the Khap Panchayat say of Haryana, bringing, virtually suggesting that even we don't accept what the Supreme Court says, then politicians dive in, especially from the opposition parties. Has that somewhere meant that this entire protest has lost its momentum? Because you've involved Khap Panchayats, seemingly extra-constitutional authorities, politicians coming there has changed the entire nature of what was seen otherwise as a fight for justice of the athletes. So Rajdeep, if the opposition comes in and if others come in, like the Khap Panchayats or the Kisan Sabhas or the women's movement, and it's not just one constituent of the women's movement which has come forward, it is women from all over the country. It is the entire movement, all the NGOs, all the different organizations that have come forward to support the wrestlers, and they have come forward because they are outraged. Why can't anybody support? It's just because they belong to a political party they can't support? That's an absolutely wrong way of thinking. No, but the Khap Panchayats cannot decide. The courts will decide. A Khap Panchayat cannot decide. Ma'am, Khap Panchayats cannot decide. So, do you agree that a Khap Panchayat cannot decide whether the girls have been sexually harassed? That will be decided by a court. No, that will be decided by the court. And we are not saying that the Khap Panchayat should decide. That is just putting a spin on it. The Khap Panchayats, if they want to support, they will support. But they are not going to decide the case. The case is obviously going to be decided by the court. But I think now a situation has come that if the court doesn't step in and sees that this case is investigated properly, transparently and quickly, then we'll have a situation where no justice will be done. Because then, and I wish... Okay, let me just take that. Let me take, you're saying you're worried, okay, you're clarifying that, ma'am. Okay, you're saying you would have liked the case to be monitored by the court.